So, very good morning, friends. Once again, welcome to our next part of unit number 1. We have been there into this precipitation unit. We have seen what is precipitation with reference to us. It is the rainfall, various forms of precipitation. Then we have seen how the precipitation or rainfall occurs, what are the necessities, types of the precipitation. Then importantly, from our point of view, we have seen how to measure the precipitation or rainfall, various rain gauges we have learnt. And then later on we have seen uh, the intense, the you can say concentration or the number of the rain gauges required in a particular catchment area, in a particular area, you can say, with reference to us, it is catchment area, because as I have been telling you again and again, we are learning this subject to find out the discharge or the runoff through the stream, so that we should be able to design the structures. So therefore we have learnt about the network of the rain gauges in a particular area. Then we have seen the Indian standard and the world meteorological standards. We have solved or we have seen one arithmetical or the numerical calculations to find out the maximum number of the rain gauges in a particular area, depending on the available rain gauges as well as the percentage error. Okay, there are two things. If I say there is 10% error, means 90% accuracy. If I say 5% error, means 95% accuracy. Okay, please try to understand. Sometimes either or, in the simple way, error will be given, means solve the numerical for 10% error, etc. But sometimes they may ask 90% accuracy. So friends, with this we have learned that how the rainfall is recorded and how that rainfall is measured uh, by the automatic and non-automatic rain gauges, etc. Now that available rainfall for a particular time, maybe that time maybe 1 hour for that particular date, or for a day, one day, or maybe 1 week, 1 month, है ना, जैसे जैसे समय ऐड करते जाएंगे. So how to prepare that rainfall data? Because as I have told you earlier, there is a definite relation between the rainfall and runoff. So that knowledge of rainfall is very important, and the data keeping or data maintenance or sometimes missing data is there. As I have told you that sometimes unfortunately if the person could not go on a rain gauge station, maybe various unseen or ununderstood reasons, then we don't have the data of that rain gauge station. So therefore, to find out the average rainfall over a particular area, we need to get the data of that, or we have to calculate. That is called as the missing data, and some recording errors. In that we are not much interested. Missing data we will see. So before using rainfall data, it is necessary to check the data for continuity and consistency. It may not be possible to measure the rainfall at a particular measuring rain gauge station ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑब्जर्वर, यानी जो आदमी जाता है मैनुअल, और इंस्ट्रूमेंट फेल्योर और एनी अदर रीजन, कुछ ना कुछ कारण के कारण. तो इसलिए क्या होता है कि हमें हमारे पास में एक आधे एरिया में, आइदर वो हमारा कैचमेंट एरिया है या कोई और जिस रीजन का हमें रेनफॉल निकालना है, वो पूरे एरिया में एक आधा रेन गेज स्टेशन, यदि कहीं कोई प्रॉब्लम है, नॉन वर्किंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, नॉन attaining by the person, non-attending by the person, or any other reason, if that rainfall data of a particular station is not available, that is called as the missing data. Then how to find out the missing data of that rain gauge station? By the
with the help of available data of nearby rain gauge measuring station. Okay, so there are various methods: arithmetic mean method, normal ratio method, inverse distance method. Three methods are there. Some numericals are also asked on this. So they are very easy method. Just we will see one by one the all into this series: arithmetic mean method, normal ratio, and inverse distance method. And just with the method we will see immediately a numerical on that, a very simple numerical. The first is arithmetic mean method. Means if there are some n number of the rain gauge stations in a particular area, है ना, समझो 10 है, n is equal to 10, 10 number of the rain gauge stations are there, but out of 10, 10 में से 9 का डाटा एखादे साल का या एखादे महीने का हमारे पास में अवेलेबल है, लेकिन सम रेन गेज स्टेशन, सम एक्स जिसका नंबर है या कुछ भी तीसरे नंबर का बोल सकते हैं, P3 और PX स्टेशन, इसका डाटा यदि नहीं है हमारे पास में फॉर द वेरियस रीजंस वी डिस्कस्ड अर्लियर, then how to find out the data of that rain gauge station? It is very easy. That non-available data Px or for a particular station is equal to जितने स्टेशन का डाटा अवेलेबल है P1 to Pn divided by number of stations, है ना. If we have 10 number of stations, one is not available, then out of the 9, all the data, rainfall data of the 9 is summed up, added, and divided by 9 will give you the data of that remaining stations. Okay, so this method is used. The normal annual rainfall of the missing station is within, यानी समझो if all those other rain gauge stations are within permissible limit and सबका जो डिफरेंस है वो 10% के अंदर है, तो ये मेथड हम यूज कर सकते हैं. डाटा ऑफ द लास्ट 3 इंडेक्स स्टेशन शुड बी अवेलेबल, एटलीस्ट डाटा ऑफ एटलीस्ट 3 इंडेक्स स्टेशन, है ना. समझो 10 में से सभी का नहीं है ऐसा नहीं चलेगा, 10 में से कम 30 तो भी चाहिए, 3 तो भी चाहिए. द इंडेक्स स्टेशन शुड बी इवनली स्पेस्ड. जो इंडेक्स स्टेशन है वो पूरे एरिया में लगभग सरी के अंतर पे रहना चाहिए, ऐसा वो है ना. ये ऐसा न्यूमेरिकल है, आपको आगे के लिए हम देखते हैं. ए वाटरशेड हैज 4 रेन गेज स्टेशंस, ABCD. वाटरशेड यानी कैचमेंट. 4 रेन गेज स्टेशंस ABCD. ड्यूरिंग ए स्टॉर्म, जब बरसात आई, फिर से मैं स्टॉर्म का मतलब आपको बताया था. स्टॉर्म इज नथिंग बट द रेनफॉल. So during a storm, a rain gauge station A was inoperative. A number का जो है वो inoperative है, may be any reason. While stations BCD are working, surrounding station A, they recorded a rainfall of 48, 51 and 45 millimeters. Estimate the missing storm precipitation of station A using arithmetic mean method. I'm very sorry. It is very easy to calculate or easy to understand that 4 स्टेशन है ABCD, इसमें का A का डाटा नहीं है लेकिन BCD का हमारे पास में रेनफॉल है, तो फिर A का जो मिसिंग है उसका कैसा निकालेंगे. सो प्रेसिपिटेशन एट A is equal to summation of the precipitation at the BCD divided by 3, है ना. 4 में से 3 का है, सो 3 का एवरेज निकाला, दैट इज 48 millimeters. So this is the first called as the arithmetic mean method. Next, friends, this is the next the method is normal ratio method. All these 3 methods, that is the arithmetic mean method, normal ratio method और आखिरी का जो index weighing method करके है, they are more and more correct. Means the first method is on an average correct, second method is more correct than the first method, and third method is almost it gives very good results. Our main intention is to get correct and correct result, because based on this rainfall data we will be finding the runoff. So now this method is nothing but weighing, or in this method the rainfall of the surrounding stations, जिसको हमने इंडेक्स स्टेशंस करके बोला है, मीन्स सराउंडिंग स्टेशंस,
जिसका मिसिंग डाटा उसको छोड़ के, दोज आर कॉल्ड एज द इंडेक्स स्टेशंस, आर वेड, वेइंग, WEIHGING, वेइंग, उस पर से वेड आया है, बाय द रेशियो ऑफ नॉर्मल एनुअल रेनफॉल्स बाय यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन। वेरी सिंपल, इट इज ऑल्सो नॉट डिफिकल्ट। जैसे हमारे पास में इफ वी हैव n नंबर ऑफ द स्टेशंस, if we have 10 number of the stations, you can say 10 number, 10 स्टेशन का, फॉर ऑल द 10 stations we have the annual rainfall, पूरे साल भर में कितनी बारिश आती है हर एक स्टेशन पे, उसका डाटा हमारे पास में है, ठीक है। और अभी हमारे पास में अनफॉर्चुनेटली एक आधे स्टेशन का, से स्टेशन नंबर 3 का है, या कोई वो स्टेशन का किसी दिन का डाटा हमारे पास में मिसिंग है, for some day or some week we are not having the data of some particular station, then what we have to do, then we have to multiply the remaining stations data, है ना। बाकी जो स्टेशन है P1 P2 P3 एक्सेट्रा, सिर्फ एक ही स्टेशन का मिसिंग है इसमें, जो हमारा कौन सा होगा वो स्टेशन। बाकी का जो डाटा है दैट P1 multiplied by the yearly rainfall of missing station divided by rainfall of the जिसका डाटा अवेलेबल है वो N1, so P1 into NX upon N1 plus P2 into NX, NX है ना कौन सा, that missing stations yearly data or annual data, annual rainfall. In this way all the stations except that missing station data is to be written, means data available multiplied by non-available stations yearly data upon available stations yearly data, that ratio, that is called as the weighing, WEIGING, weighing. And in this way this formula can be in short written NX upon N. NX is the yearly data of that missing station, N is the number of the index stations, nearby stations, P1 upon N1 plus P2 upon N2 plus and so on, Pn upon Nn. This will give the missing data Px, and N1 and N2 are the normal annual rainfall, annual and yearly, of the index stations. Nx is normal annual rainfall of missing stations. N are the number of stations. Again, this method is applicable when the missing station rainfall, yearly rainfall or precipitation is within 10%, बहुत ज्यादा डिफरेंस जहां नहीं है और सब आसपास में नियर बाय है, and they are evenly distributed or spaced into the catchment area. One numerical we'll see as we have discussed. A precipitation at station X was inoperative for some time, during which the storm occurred. The storm totals at 3 stations A, B, C surrounding X are 6.6, 4.8 and 3.7 centimeters, and the normal annual precipitations or the rainfall at the stations X, A, B, C are 65.6, 72.6, 51.8 and 38.2 centimeter. Estimate the storm precipitation for station X. ठीक है? So NX is nothing but that annual rainfall of missing station, that is 65.6, और बाकी NA, NB, NC are remaining annual rainfall values, are the average annual precipitation. X, ABC and then PA, PC, PB and PC, ये 6.6, 4.8 और 3.7 centimeter है, are the storm station of stations ABC surrounding X. Then the storm precipitation at P or at missing station X is Px is equal to जो remaining station 3 है 1 2 3 3, therefore 1 by 3 into nx upon na, जो फार्मूला हमने देखा था, into Pa plus and so on. ये nx हम बाहर भी निकाल सकते हैं, which is equal to 65.6. So 65.6 upon 72.6 corresponding एनुअल रेनफॉल ऑफ स्टेशन नंबर ए, उसका वो डेली जो भी रेनफॉल है वो 6.6 है, और अदर स्टेशन का इन द सेम वे, दिस इन दिस फार्मूला द वैल्यूज आर पुट, एंड देन वी हैव फाउंड आउट
the missing station's precipitation, which is equal to 6.11. Okay. Again, weighing with respect to the other stations, the annual rainfall, and applying that to that daily rainfall which is missing. Okay. So now the third method. This is again more appropriate, more correct method. It is called as the inverse distance method, और it is also called as यूनाइटेड स्टेट्स वेदर सर्विस मेथड. यहाँ पे क्या करते हैं कि जो स्टेशन का डाटा मिसिंग है, ठीक है, द स्टेशन हुज डाटा इज मिसिंग, दैट स्टेशन इज गिवन द कोऑर्डिनेट पोजीशन, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस पोजीशन स्टार्टिंग, जिसको हम 0 0 करके बोलते हैं. तो जिसका मिसिंग है वो ओरिजिन हो गया 0 0, इट्स ऑर्डिनेट विल बी 0 0, एंड करस्पॉन्डिंग टू दैट मिसिंग स्टेशन अदर स्टेशंस ऑर्डिनेट्स आर फाउंड आउट, है ना. दे आर कॉल्ड एज द XI एंड YY. आपके ध्यान में आ रहा है क्या? जो स्टेशन का डाटा मिसिंग है वो स्टेशन को हम ऊपर में हम X और Y एक्सिस निकालेंगे, और वो स्टेशन का जो लोकेशन है वो 0 0 रहेगा, ओरिजिन रहेगा. एंड करस्पॉन्डिंग टू दिस S एंड X एंड Y एक्सिस और ऑर्डिनेट्स, द अदर स्टेशंस ऑर्डिनेट्स आर फिक्स्ड, है ना. इसके हिसाब से बाकी स्टेशन X एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे, Y एक्सिस यानी उसके ऑर्डिनेट निकालेंगे. दे आर कॉल्ड एज द XI एंड YY. सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डिनेट्स द वेइंग इज डन, जिसको वेइंग वेटेज WI of each station is represented by the inverse of square of distance from the missing station, and this is given by how it is solved. We will see one numerical, so don't worry for that. So WI or that weightage constant is equal to 1 upon DI square. ठीक है. स्टेशन नंबर I यानी DA है, A स्टेशन है, ABCD है, तो A स्टेशन है, और उसके ऑर्डिनेट जो है ए स्टेशन के विथ रेफरेंस टू द मिसिंग स्टेशन दैट इज 0 0, वो ऑर्डिनेट समझो XA और YA है, ए स्टेशन के X A Y. तो 1 अपॉन XA स्क्वायर प्लस YA स्क्वायर, ये हो गया वेटेज कांस्टेंट. अब इसके ऊपर से कैसे हम रेनफॉल निकालते हैं वो हम आगे में देखते हैं. तो ये समझना पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ दिस वेटेज आर कैलकुलेटेड विथ रेफरेंस टू कोऑर्डिनेट्स 0 0 ऑफ द मिसिंग स्टेशन, है ना. सो नाउ द फॉर्मूला फॉर द मिसिंग रेनफॉल डाटा एट एनी स्टेशन X Px इज इक्वल टू समेशन ऑफ, जैसे ये ऑफ जैसे PA इंटू WA. PA is the rainfall available of station A plus PB into WB. हर वक्त हम WA, WB, WC वर्कआउट करेंगे based on the ordinates XA, XB. हेलो, the missing rainfall data of the station X is then computed from the following. So the missing data is summation of the multiplication of the data available at station A, B, C, D multiplied by the weighing factor that we have constant calculated WA, WB, WC divided by summation of the all that weighed constants, weighing जो किया है वो. So this will give you the missing station data of that station. The above method gives good results, acceptable method for scientific analysis. However, the limitation of this method is in missing rainfall data between the highest and the lowest values of the index stations. Sometimes that may not give good results, etc. That they want to say, we are not worried about that. This is the numerical. In a river basin catchment area, station A was inoperative during a storm. बरसात आई कैचमेंट एरिया के ऊपर में, किसी एरिया के ऊपर में, और उसमें से एक स्टेशन जो ए है वो बंद था. वाइल स्टेशन B, C, D, E
और सराउंडिंग ए के आजू बाजू जो 4 स्टेशन है BCDE, ये लेकिन चालू थे। और उन्होंने जो रेनफॉल रजिस्टर किया, जो रेनफॉल वहां पे हमने गिना, वेयर इन ऑपरेशन रजिस्टरिंग रेनफॉल एज 74 मिलीमीटर, 88 millimeter, 71 millimeter and 80 millimeter at BCDE. Now the coordinates of the BCDE with reference to A are P का 9,6 है ना, आपके ध्यान में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि 9,6 यानी A के हिसाब से ये पहले क्वाड्रेंट में है ना। A यदि 0 0 है तो 9,6 यानी दोनों पॉजिटिव है, तो ये पहले क्वाड्रेंट में है। दूसरा स्टेशन सी है, इसका 12 एंड -9 है, इसका मतलब दिस इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। ये ऐसे ही समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ, आपको क्वाड्रेंट नहीं ध्यान में आया तो भी चलता है, लेकिन कैलकुलेशन समझना चाहिए। तीसरा है -11 -6 मीन्स इट इज इनटू द थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज -7 यानी x माइनस है y प्लस है, तो दिस इज इनटू द फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी you can visualize that B, C, D, E are surrounding station A. और A का coordinate naturally it will be 0 0. So estimate the missing precipitation of station A by the inverse distance meter. ऐसे न्यूमेरिकल एग्जाम में भी आते हैं। So now we will first find out that weighing constants and directly squaring it. ठीक है, तो पहला जो DB स्क्वायर इज इक्वल टू हमने देखा था 1/XI स्क्वायर प्लस YI स्क्वायर, ऐसा उसका ये फॉर्मूला था हमारे पास में जो ये था। सो DB दैट इज एट द डिनोमिनेटर इज 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, दैट इज द XB स्क्वायर प्लस YB स्क्वायर, that is 117. The constant WB, weighted constant, is equal to 1 upon DB square. So 1 upon 170, that is 8.547 into 10 raised to -3. In the same way, all other weighing constants C, D, E are worked out. WC, WD, WE, जिनका हमारे पास में प्रेसिपिटेशन डाटा अवेलेबल है। ठीक है, इसी हिसाब से DC स्क्वायर जो डिनोमिनेटर का पार्ट है DC यानी 1 अपॉन DC, ऐसा है DC स्क्वायर। सो 12 स्क्वायर प्लस -9 स्क्वायर, नेचुरली दोनों प्लस हो जाएंगे, उसके स्क्वायर 225, तीसरे का 157, चौथे का 98, और इसका इनवर्स किया तो ऑल दिस वेइंग कांस्टेंट्स वी हैव फाउंड आउट with reference to the station A. Now the remaining part is very easy, that the missing data Px is equal to the first rainfall 74 multiplied by its weighing constant, that is 8.547, है ना। 10 raised to -3 सभी तरफ में कॉमन है तो उसको बाहर निकाला, है ना। 88 इंटू 4.44, 444. The third one is 71 into this 6.369, and last one is 80 into 10 into 10.204. 10 raised to -3 is common in numerator as well as it is common in denominator. फिर से सभी weighing constant की डिनोमिनेटर में टोटल करना है, उसमें भी 10 raised to -3 कॉमन है, तो न्यूमरेटर और माइनस और डिनोमिनेटर का 10 raised to -3 विल गेट कैंसल्ड, और इसका जो रेशो है वो PX या मिसिंग रेनफॉल डाटा इज 77.5. ओके, so these are the numericals which are there. Again, if any numericals are there in your notes at the beginning, then please try to solve it and submit me, है ना। जैसे किसी एक ने ही कल सबमिट किया, ऐसा करण ने किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे एवरीबडी शुड टेक इंटरेस्ट, मैंने बोला फर्स्ट एंजॉय द सब्जेक्ट देन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, समझते जाइए बहुत, और कोई चीज जिंदगी में बेकार जाती नहीं है, ये ध्यान में रखना, छुड़ाते जाना। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, आपको फ्यूचर में इसका बहुत कहीं ना कहीं तो फायदा जरूर होगा, कहीं बेकार नहीं जाएगा ये कैलकुलेशंस।
So now friends, we will again move further by calculating the missing data of the rainfall from amongst the वेरियस डाटा. एखादे स्टेशन का बहुत सारा डाटा है, ऐसे एखादे कैचमेंट में हमारे पास में बहुत सारे स्टेशन है. तो ये सब डाटा हमारे पास में होने के बाद में ये डाटा को प्रेजेंट कैसा करेंगे. दिस प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ना for further action. Again, as I have told you, we are using all this knowledge for calculating the discharges, etc. So the presentation of the collected rainfall data is done into three methods. Okay, they are also very important. Not only from this semester point of view, if you will understand it better, it will be useful to you in your next semester also. जो आपको इरिगेशन इंजीनियरिंग करके अगले सेमेस्टर में है, उसमें भी आपको इसका बहुत फायदा होगा. अभी समझ लिया तो ये 3 मेथड है जिसमें हम रेनफॉल डाटा प्रेजेंट करते हैं. दे आर द हाइटोग्राफ मेथड, मास कर्व ऑफ रेनफॉल मेथड एंड पॉइंट रेनफॉल मेथड. वेरी इजी दे आर, बट अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज हाइटोग्राफ, ये हम समझते हैं. This is the graph between the time or the duration and the rainfall intensity. Okay. Again, I will repeat. It is a graph on x-axis. The duration or the time is plotted like it starts with the 0 hour, 2, 4, 6, 8, 10, 12. है ना. ऐसा हम समझते हैं कि जैसे हमने we are trying to plot a hydrograph of the rainfall for 24 hours. 24 घंटे के लिए. कहीं तो भी हमारे मोहगांव में एक रेनगे स्टेशन है, वो रेनगे स्टेशन पे हमने करण विश्वास को बैठा दिया 24 घंटे के लिए उसके साथ में, और उसको हर शिफ्ट में किसी आदमी किसी फ्रेंड को साथ में दे दिया, और हर 2 घंटे में वो रेनगे स्टेशन का रेनफॉल गिनता है. वो जो सिलेंडर है उसमें वो गिनता है कि भाई सुबह 6 बजे से तो 8 बजे तक के फॉर द फर्स्ट 2 आवर्स है ना. 0 to 2 पहले 6 बजे यानी 0 आवर्स पकड़ा हमने, तो 6 बजे से 8 बजे तक के फॉर द फर्स्ट 2 आवर्स ही हैज फाउंड दैट द टोटल रेनफॉल ड्यूरिंग दिस पीरियड इज 0.8 सेंटीमीटर्स. 0.8 सेंटीमीटर्स. ओके, फॉर 2 आवर्स. 2 घंटे के लिए 0.8 सेंटीमीटर्स. तो 1 घंटे के लिए कितना हो गया? 0.8 divided by 2. Okay, I think everybody must be understanding it. I am showing on the graph the meaning of the graph. Please try to understand. 2 घंटे में 0.8 सेंटीमीटर यानी 80 मिलीमीटर्स का रेनफॉल हुआ. रेनफॉल हम डेप्थ में गिनते हैं, तो 1 घंटे में कितना हुआ? 0.8 सेंटीमीटर डिवाइडेड. हेलो, एनी प्रॉब्लम? कोई सुनाई नहीं दे रहा, ऐसी कोई अड़चन है कि दिख नहीं रहा? नो सर. हाँ, चलो. सो फॉर 2 आवर्स द रेनफॉल इज 0.8 सेंटीमीटर्स है ना. वी मेजर इन द डेप्थ and therefore for 1 hour it will be 0.4 centimeters. So that 0.4 centimeter per hour is called as the rainfall intensity. Okay, I am telling you very important concept, though we have discussed it earlier. The rainfall per unit time है ना, नोट डाउन करके रख दीजिए कहीं तो भी. rainfall per unit time is called as the rainfall intensity. It may be per hour, it may be per minute, it may be per second. ठीक है, हमारे पास में जितने समय का रेनफॉल है उसको यदि उतने टाइम से हम डिवाइड करते हैं तो दैट विल गिव यू रेनफॉल इंटेंसिटी डिपेंडिंग ऑन दैट रेनफॉल दैट ड्यूरेशन यूनिट यू आर अप्लाइंग. अब यहाँ पे हमारे पास में 2 घंटे के लिए फॉर 2 आवर्स द रेनफॉल इज 0.8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2. Therefore for the 2 hours we have said that rainfall intensity is 0.4 सेंटीमीटर्स पर आवर है ना. ये हॉरिजॉन्टल हमने लाइन एक निकाला फॉर 2 आवर्स. देन 2 घंटे के बाद में 8 बजे के बाद में अगले 2 घंटे यानी 8 से 10 बजे तक के रेनफॉल वाज देयर कंटिन्यूअस एंड दैट रेनफॉल वाज 1.6 सेंटीमीटर.
2 घंटे में रेनफॉल कितना हुआ? 1.6 सेंटीमीटर. द रेनफॉल इंटेंसिटी कितनी हुई? 1.6 डिवाइडेड बाय 2, that is 0.8 centimeters per hour. Again we have plotted it as 0.6 0.8 centimeters per hour. So in this way we proceeded further for every 2 hours. ये 2 घंटे का हाइटोग्राफ बताया गया है. दिस में बी 1 hour, दिस में बी 1 day ऑल्सो. ऐसा हाइटोग्राफ हम एक दिन का भी निकाल सकते हैं. हमारे पास में एक हफ्ते का यदि रेनफॉल है कि 24 घंटे में हमारे पास में आया कि टोटल सबकी करने के बाद में 10 सेंटीमीटर एक दिन रेनफॉल हुआ, दूसरे दिन 12 सेंटीमीटर हुआ, तीसरे दिन 6 सेंटीमीटर हुआ. सो वी कैन प्लॉट द सेम हाइटोग्राफ. दिस इज कॉल्ड एज द हाइटोग्राफ, वेयर इन द टाइम विल बी इन डेज. दिस हाइटोग्राफ मे बी टाइम इन मंथ्स. जनवरी में इतना, फरवरी में इतना, मार्च में इतना. This hydrograph can also be prepared for year also. Okay, play friends, please try to understand. So this is called as the hydrograph. Now we will move, just read out this thing. By understanding this hydrograph is a bar graph showing the intensity of rainfall with time. Okay, you are viewing on your screen. On y-axis rainfall intensity, its unit is written centimeters per hour. On x-axis, the unit of the time is shown, and the unit are in hours. And this graph is for every 2 hour. है ना, इस पर से हम 1 hour का भी कैलकुलेट कर सकते हैं. So the hydrograph can be prepared either from the mass curve of rainfall, ये आगे में हम देखने वाले हैं क्या है mass curve of rainfall, or directly from the data obtained from the automatic or non-automatic rain gauges. अभी आपके ध्यान में आ गया होगा. ठीक है, जस्ट एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं, इसका आंसर आप मुझे व्हाट्सएप पे दीजिए. ओके, लिसन वेरी केयरफुली, नोट डाउन भी कर सकते हैं. द व्हाट विल बी द एरिया बिलो दिस हाइटोग्राफ इंडिकेट. आई विल अगेन रिपीट. यही हाइटोग्राफ जो आप देख रहे हैं 0 से 12 आवर्स का, व्हाट विल द एरिया, है ना, एरिया निकाल सकते हैं ना हम. ये जैसे 0.4 सेंटीमीटर पर आवर ऐसा दिया है फॉर 2 आवर्स. सो द दिस इज ए रेक्टेंगल whose vertical length or vertical height is 0.4 centimeter, and horizontal is 2 centimeter or 2 hours. 0.4 centimeter per hour multiplied by 2 hour, so it will be 0.8 सेंटीमीटर. ओके, मैं ही सॉल्यूशन बता रहा हूं लेकिन आपको बोलना है बाद में. प्लीज टेल मी व्हाट विल द एरिया बिलो दिस हाइटोग्राफ indicates. Okay, and for this hydrograph please give me that value. ये आपके लिए होमवर्क. यदि ये समझ में आया तो आई विल बी हैप्पी. ये आगे में कुछ थोड़ा एक्सप्लेन भी किया है. So hydrograph is a plot of accumulated precipitation against time plotted in the chronological order. Again ये दूसरा एक हाइटोग्राफ बताया गया है. ये हाइटोग्राफ में फिर से 0 to 8 आवर्स, 8 घंटे का है. 0 to 8, 8 to 16, 16 to 24, 24 to 32 and so on up to 48 hours. दो दिन का रेनफॉल है. फॉर एवरी 8 hours the rainfall intensity is shown on the y-axis. 0.3, the second is 0.2, the third is 0.25, etc., etc. So on this the total duration is it is written here 46 hours, but it is 48 hours, and for every 8, so 48 hours, and the total depth of the rainfall is 10.6 centimeters. So some indication of the first hydrograph solution is given here. Okay, so only this is misprinted. Duration should be 48 hours. Rest is correct. Let us move further. Mass curve of rainfall. It is a plot of cumulative depth of rainfall against time.
again a concept to be understood, very important. We have seen hydrograph. Hydrograph में for every time, for every minute, you will get the intensity of rainfall. Okay, listen to my statements. हाइटोग्राफ में आपको एक्स एक्सिस में ड्यूरेशन है, तो हर समय के लिए आपको रेनफॉल इंटेंसिटी मिलेगी, या ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पैच ऑफ टाइम, 2 hours, 4 hours, 8 hours, 10 hours, etc. यू कैन गेट द क्यूमुलेटिव डेप्थ ऑफ द रेनफॉल. टोटल बारिश कितनी हुई वो आपको पता चलेगी. So what is mass curve of the rainfall? This is also a graph between time or the duration, that is 0 hours, है ना, सुबह 6 बजे से यहाँ से चालू करते हैं, the 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24 and so on. This may be in hours, this may be in days, this may be in months, and can be in years also. But on the y-axis, the in hydrograph, y-axis consists of the rainfall intensity, but this consists of the cumulative rainfall in centimeters. यानी जैसे समझो 0 to 4 hours, for the first 4 hours, how much rainfall has taken place, total rainfall. ये हो गया पहले 4 घंटे के लिए वैल्यू. अभी नेक्स्ट 4 आवर्स, पिछले 4 घंटे का रेनफॉल और नेक्स्ट 4 आवर्स का रेनफॉल, इसको बोलेंगे क्यूमुलेटिव. सो द 8 आवर्स ऑर्डिनेट ऑफ दिस मास कर्व, फॉर द 8 आवर्स ऑर्डिनेट, द मास कर्व फॉर द मास कर्व will be the summation of the rainfall for the first 2 hours plus the summation of the rainfall for the next 2 hours, next 4 hours. So 8 hours rainfall is there. The same will be there. जैसे 12 hours के लिए, तो 12 घंटे के लिए पिछले कंप्लीट 12 घंटे के लिए घंटे में कितनी बारिश आई, that is called as the cumulative rainfall for the past 12 hours. Again, the next plot for the 16, 20 and so on next will be the cumulative rainfalls. They are called as the cumulative rainfall. So therefore it is the plot of cumulative depth of rainfall against time. So it will show, जैसे हमारे पास में हमको पूछा कि भाई for the last 24 hours, यानी पिछले 6 बजे से अभी 6 बजे तक के कितना रेनफॉल हुआ, तो ये ग्राफ देखने के बाद में हमें इमीडिएट पता चलेगा. ठीक है, या अभी समझो ये डेली ग्राफ है, तो आज की समझो 13 तारीख है, तो 12 तारीख को कितनी रेनफॉल हुई, 11 तारीख को कितनी हुई, दैट कैन बी डायरेक्टली फाउंड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस मास कर्व ऑफ रेनफॉल. वी डोंट नीड द इंडिविजुअल हाइड्रोग्राफ. ठीक है, हाइड्रोग्राफ के ऊपर से ही हम मास कर्व निकाल सकते हैं. बट दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द मास कर्व. नाउ इफ वी अंडरस्टूड द मास कर्व, हाउ व्हाट डज दिस मास कर्व शोज. ये मास कर्व क्या करेगा, यदि रोज या हर 2 घंटे में बारिश आ रही है, if the rainfall is occurring continuously for say 24 hours in every 2 hours, then this mass curve will definitely move upwards. ये mass curve क्या होगा, ऊपर ऊपर ही जाएगा, है ना. यदि किसी 2 घंटे में, जैसे यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा 12 to 16 hours between point B to C, or say after 24 between point 4 to 8 D to E, this curve is horizontal. This curve is horizontal. So what does this show? The horizontalness shows that the curve, the cumulative rainfall at C is equal to cumulative rainfall at B, or cumulative rainfall at E is equal to cumulative rainfall at D. Means there is no rainfall between B to C, there is no rainfall between D to E. Okay, so try to understand these things, how to read the graphs. Or if
this mass curve is rising very steeply. जैसे पॉइंट ए से लेके आगे में है, जीरो से लेके आगे में, or somewhere between point E to F. If this rises steeply, that shows that in between these 2 points, that is point A to B or between point E to F, the rainfall intensity is quite large. बारिश बहुत जोरों से आई है वो पीरियड में, ठीक है. So therefore, let us read out now what we discussed. The steepness of the curve indicates the intensity of rainfall. And the more steep the curve, more is the intensity of rainfall. A horizontal portion, that is BC and DE, of the curve indicates that there was no rainfall during that period. Okay, the mass curve of rainfall is always rising curve. The intensity of rainfall during any period is given by, आगे में देखते हैं, thus a is given by that slope, that is delta p upon delta t, है ना. कोई भी दो ऑर्डिनेट का जो रेशियो है, that will give you the rainfall intensity I, which कहीं भी ये कर्व के ऊपर से आप कौन से भी दो पॉइंट के बीच में की रेनफॉल इंटेंसिटी कैसी निकालेंगे, तो कोई भी दो पॉइंट में आप एक हॉरिजॉन्टल ऑर्डिनेट निकालिए जिसको हम डेल्टा टी या टाइम बोलेंगे फॉर से एनी 2 आवर्स. ये छोटा भी टाइम लिया बड़ा भी टाइम लिया तो चलता है, और उसके करस्पॉन्डिंग वर्टिकल ऑर्डिनेट निकालिए, दैट यू कैन से डेल्टा पी. द रेशियो ऑफ दिस टू ऑर्डिनेट्स will give you the rainfall intensity from the mass curve itself. Thus, AB first rainfall, in between AB no rainfall, between BC from A to B first period of the rainfall it is increasing. B to C there is curve is horizontal. C to D also shows the rising curve. D to E again horizontal. E to F is again the third period of the storm. Okay, this is all the utility of this mass curve. It is useful for extracting the information on duration and magnitude of the rainfall or the storm. The mass curve of a design storm can be obtained by maximizing the mass curve of severe storms on the basin. एखादे ये जैसा मास कर्व हमारे पास में है. सो डिजाइन स्टॉर्म यानी जिसका डिस्चार्ज बहुत ज्यादा है, बिकॉज फ्रॉम दैट मैक्सिमम स्टॉर्म, और जिसका रेनफॉल बहुत जाता है, आई मीन टू से, क्योंकि जिसका रेनफॉल ज्यादा है उसका रन ऑफ ज्यादा रहेगा ना, ज्यादा बारिश ज्यादा पानी बहेगा ग्राउंड के ऊपर से नदी नालों से, तो उसके लिए हमें स्ट्रक्चर डिजाइन करना है. सो the discharge for which we will be designing the structure, that is the maximum discharge, and for this the storm or the rainfall will be there. For that storm we call as the design storm. So that design storm will be from the various storms. जो बहुत सारी बारिश आती है उसमें से वो एक रहेगा. तो इसलिए ऐसा ये यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी डिजाइन स्टॉर्म हमें चाहिए फ्रॉम द मास कर्व, तो वो हमें बाय मैक्सिमाइजिंग द मास कर्व ऑफ द सीवियर स्टॉर्म्स इन द बेसिन, तो इसमें से हम वो पार्ट ले सकते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द डिस्चार्जेस एक्सेट्रा. दैट वी विल सी, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द meaning of all this and what we can read through this mass curve. You can see first storm from A to B, you can see second storm from C to D, there is third storm from E to F. The values of the storms are also written. First storm 4 सेंटीमीटर, यानी पहले 12 घंटे में 4 सेंटीमीटर की बारिश हुई. सेकंड स्टॉर्म between 16 to again next 12 hours the rainfall is 3.6 centimeters. The next third storm between almost 5 to 18 hours, means almost 5 to 16 hours, 11 hours, the rainfall is 2.6 centimeters. So all this we can read through the mass curve of rainfall. Okay,
Friends, please try to understand. This is a very important and very interesting concept. So we have seen two methods of representation of the rainfall data. First is the hydrograph method and the second is the mass rainfall curve method. थर्ड इज वेरी सिंपल, पॉइंट रेनफॉल मेथड, यानी किसी भी एक स्टेशन के ऊपर में, जैसे फॉर एग्जांपल हम बार बार एग्जांपल लेंगे कि हमारे कॉलेज में मोहगांव में एक रेनगे स्टेशन है, तो इस यहाँ का जो रेनफॉल डाटा हम मेंटेन करेंगे, है ना, फॉर एवरी डे एंड मेंटेनिंग द डेट एंड फॉर एवरी आवर, हमें एक एक मिनट का कोई रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, but for every 1 hour we can record the data. We can prepare a register, say for the 13th of August from morning 6 बजे हम क्या रीडिंग है वो कितना पानी जमा है रेनफॉल का वो उसमें लिखेंगे, 8 बजे फिर कितना है वो देखेंगे, 10 बजे के, और फॉर एवरी 1 hour 6, 7, 8, 9, 10 for 24 hours. So between every 1 hour, how much is the rainfall that we will record? This we will have a daily data then. सबकी टोटल किया आवरली की, तो we will get the 1 day data for that date, 13th, 14th, 15th. Okay, in this way एक वीक का डाटा सोमवार से लेके तो रविवार तक के, तो हमें 1 week डाटा we will get. All the 4 week data we add, we can prepare the table for the monthly data. 12 महीने का टोटल किया तो वी कैन गेट फॉर द ईयरली डाटा. ऐसे कई सालों का डाटा, मैंने जैसे आपको बोला, हमारा जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है एंड द अदर स्टेशंस आल्सो अदर देन मेट्रोलॉजी, वहां पे ये डाटा मेंटेन किया जाता है. दिस डाटा मेंटेनेंस और द रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज द पॉइंट रेनफॉल मेथड. Point rainfall is for a particular station. The rainfall data of a station. This data can be presented daily, weekly, monthly, seasonal, annual, or also you can add hourly also. This data is presented graphically as plots of magnitude versus chronological time in the form of the bar diagram. जैसे हाइड्रोग्राफ वगैरह देखा हमने. Point precipitation data are used collectively. ये जो बहुत सारे स्टेशन का ऐसा पॉइंट डाटा जो है, इस पर से हम बहुत सारे स्टेशन, बाकी भी स्टेशन का कलेक्ट करके यूनिफॉर्म डाटा, यूनिफॉर्म रेनफॉल एंड द इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी कर्व्स एक्सेट्रा, दैट विल बी लर्निंग लेटर ऑन, वो सब हम कर सकते हैं. ठीक है, अभी हम नेक्स्ट इसमें एंटर करते हैं कि एखादे कैचमेंट एरिया के ऊपर में, in a certain area, say on a particular catchment area, we have say number of the rain gauge stations, n number of rain gauge stations. So how to find out the average rainfall or the mean rainfall precipitation over that area? Okay, so there are certain methods that we will try to learn. Just we will understand and take the break today there, and then next time we will see. The rain gauges or the rain gauges rainfall represents only point sampling of the aerial distribution of the storm. है ना, किसी एक पर्टिकुलर रेन गेज का जो रेनफॉल है, वो रेन गेज का जितना अपन वेइंग करेंगे एरिया का, एक रेन गेज का जितना आजू बाजू का वो एरिया रिप्रेजेंट करता है, उतने इसका वो रेनफॉल बताएगा. लेकिन पर्टिकुलर एरिया के ऊपर में उसमें कितने रेन गेजेस है, उस हिसाब के से कैसा हम प्रेसिपिटेशन निकालते हैं वो हमें पढ़ना है. देयरफॉर द इम्पोर्टेंट रेनफॉल फॉर ए हाइड्रोलॉजिकल एनालिसिस इज ए रेनफॉल ओवर ए पर्टिकुलर एरिया सच एज ओवर द कैचमेंट. जैसे कि हमारे लिए बार बार हम देख रहे हैं, इट इज फॉर द कैचमेंट, है ना. अब हमारे एरिया के हिसाब से हम बोलेंगे ऑन आवर से नागपुर तालुका, नागपुर डिस्ट्रिक्ट, then for our Vidarbha region, for our Maharashtra, and for the whole of the India. So that is over the area. But for civil engineer, from our point of view, it is for the catchment area. So therefore, to convert the point rainfall, है ना, हमने अभी point rainfall method आखिरी में देखा था. To convert the point rainfall values,
that is the rainfall value at a particular stations or at the various stations, टू into एवरेज वैल्यू ओवर द कैचमेंट, यानी बहुत सारे स्टेशन है एक आधे कैचमेंट में, तो उसमें से एवरेज वैल्यू, क्योंकि वो कैचमेंट के लिए एक रेनफॉल वैल्यू हमें चाहिए, टू कैलकुलेट द रन ऑफ, the following methods are used. Okay, they are the arithmetical mean method, they are the method of the Thiessen polygon, and the third is isohytal method. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, यू विल बी वेरी इजीली अंडरस्टैंडिंग इट. Again I will repeat, to find out that average rainfall over a particular catchment area or over a particular area within which there are various rain gauge stations, then for that purpose we have three methods are there. They are all the arithmetical method, you can say arithmetic and use of some geometry, geometrical areas etc, but they are very easy. दे आर द अरिथमेटिक मीन मेथड, ये तो बहुत इजी है. ये मीन मेथड यानी जितने स्टेशन है उसके स्टेशन की रेनफॉल डाटा का सम कीजिए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द रेनफॉल स्टेशंस, रेनगे स्टेशंस. दिस इज द अरिथमेटिकल. बट द मेथड ऑफ थीसन पॉलीगन, मैंने आपको बताया था, थीसन is one of the hydrologist who has derived his method by weighing, WEIGHING, weighing the areas of the particular station over a total catchment area. किसी एक स्टेशन का एरिया कितना रहना चाहिए वो उसने पूरे एरिया का को पॉलीगॉन में कन्वर्ट करके वो समझाया है. और आइसोहाइटल मेथड है, तो इसमें आइसोहाइट ये कंसेप्ट मैंने आपको पहले समझाया था. आइसोहाइट इज नथिंग बट द लाइन और ए कंटूर, यू कैन से, है ना. पैरेलल कंटूर का मतलब आपको अभी तक मालूम है. सो इट इज जस्ट सिमिलर टू कंटूर. सो दिस इज द लाइन जॉइनिंग इक्वल रेनफॉल्स एट ए पर्टिकुलर टाइम, है ना. कई जगह पे जब एक सरीखा बारिश होती है वो पॉइंट यदि हमने ज्वाइन किए तो उसको आइसोहाइट करके बोलते हैं. तो ये आइसोहाइटल मेथड इज यूज्ड टू फाइंड आउट अगेन the mean precipitation. Okay, so just we will take the break here.